means called. So by what name you're called? I'm asking you. So yeah, you have to say Korimli Ashley. Korimli Ashley. Yeah, Korimli Ashley. And Manishma. Manishma means how are you? Hello. Manishma Could means. Could you raise the volume? Already, I'm already on full. Everybody can hear me? Okay. Yes, sir. I think my volume is full already. Sister Purnima, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. It's clear. Everyone? Yes, Pastor. Yeah, see, my volume is at full, 100%. So, the camera. formal way to ask Mashimka. Mashimka means what is your name? But informal way to ask what is your name is Korimli. The word Kwara means he called. You know, Kwara means he called. So Korimli, Li means you. By what name you're called? So you can say Korimli, what is your, whatever your name. For example, I'll ask Sister Priyanka, Korimli. So what you will say? Korimli Priyanka. Yeah. So remember this word. And second thing I ask you is, how are you? That is Manishma. Manishma. So what could be your response? How are you? If you want to say, I am fine. I am fine. So you can say Ani Beseder. Ani Beseder. If you want to write it down, write it down. Ani Beseder. Beseder means I am fine. Ani means I. Ani Beseder. Veata. What about you? Ani Beseder. Veata. Veata means what about you? So what you will respond then? If I ask you Manishma. Manishma means how are you? Manishma. Ma is used here. Manishma, how are you? You can give the answer Ani Beseder. Ani Beseder means I am fine. And if you want to ask person who is talking to you, you can say Veata, question mark, Veata. Veata means and you, what about you? So what you will say? Again, you can answer in three ways, Lora, To, simply To or Tomeud. At least if you go to Israel or if you meet a Jew, you should be able to talk these things. Okay, Shana, tell me if you want to ask, how are you? Too many echo. Yes, my father's phone was. Yeah. If you want to ask, how are you? Manishma. Manishma. So, Ani Beseder, Veata? To. To.
Okay, very good. You can say Tomeud or you can say Lora also. Now, Yes. One more word I will teach you. If any person will meet you and he will say in Hebrew, where are you from? Where are you from? So in Hebrew, that is me'efo ata. Me'efo ata. Me'efo ata. Where are you from? So Ashley, me'efo ata. Where are you from? Plymouth, Minnesota. Me'efo. The USA. Pardon? Minnesota. No, I'm asking where are you from? From which country you belongs to? I said Minnesota, which is my state. Minnesota. State. United Okay. States. Okay. Yes. It's United States. Okay. Your voice is breaking. Minnesota. Okay. From India. United States. Yeah. Yeah. So how will you say in Hebrew? That is. Ani me Minnesota or Ani me United States. Now, from India, if you want to say, I am from India, how will you say in Hebrew? Ani me India. For India, there is a very proper word in Hebrew. Hodu. What is that word? You can Ani say me Hodu. Ani me Hodu. That is in Esther. In Esther, you will find for India, the word used is Hodu. I don't know what is the word used for United Kingdom or United Nations, United States. So if I'll find in Hebrew how they say for England, they say England, England they say. But for US, I don't know. I will see. So again, Shana, me efo ata? Ani Odu. Ani me hodu. Me. Me Odu. Yeah. So at the end of conversation, you can say Toda lehit raot. Goodbye. Toda lehit raot. Okay. So last time I think we started prepositions. Is it? How am I supposed to play with you if you don't ever let the ball go? Pardon? Okay. We started preposition. Preposition is a word that shows the relationship between two things. Yes, sister, you can translate. Unmute yourself. सॉरी हमने पिछली बार देखा था शब्द योगी अव्यय या संबंध सूचक अव्यय के बारे में। इसमें हम दो जगहों की रिश्ता बताते हैं, जगह बताते हैं इसमें।
a word that shows the relationship between two things. It's called preposition. Last time we saw these slides where now if you have to see the object is table. So towards, near, on, over, behind, beside, through, under, in, from, out, far, around. All these are the prepositions. अब यहाँ पर कोई भी वस्तु की जानकारी देना चाह रहे हैं तो उसके बारे में संबंध बताना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे शब्द हैं, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, जो भी शब्द हैं ये संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं या फिर इसको शब्दयोगी अव्यय भी कहेंगे। Now in Hebrew, if we see, these are all preposition. That is phane before, then al by, then preposition lamed with shiva is to, at, preposition with bet with shiva is in, with, by, al is on, takat is under, akhar is after, and min is from. यहाँ पर हम देख रहे हैं इब्री भाषा में जानकारी देने वाले शब्द, जैसे यहाँ एल का मतलब ऊपर है और जिसमें आइन का इस्तेमाल होता है, और दूसरा एल यानी अलेफ के साथ जो शुरू होता है उसमें मतलब है से, करने माने के सामने या उपस्थिति में। बे के साथ में शिवा लगा हो तो उसका मतलब होता है अंदर। लामेद के साथ शिवा लगा हो तो उसका मतलब हुआ को या उसके वहां पर। तखात का मतलब हुआ नीचे, अखार का मतलब हुआ पीछे या बाद में, मिन का मतलब हुआ से। So all these prepositions you will find in biblical Hebrew every now and then. और ये तमाम ऐसे वो संबंध सूचक अव्यय है जो अक्सर हमको बाइबल के कलाम में मिलते हैं। Now, when we have to say two things in between, then that time the word used is ben. जब हमको कोई दो चीजों के बारे में जानकारी देनी है कि उसके बीच में कुछ है, दोनों के बीच में है, तब इस्तेमाल होगा बैन। There are three types of prepositions: independent prepositions, markup preposition, and inseparable prepositions. अब हम तीन किस्म के शब्दयोगी अव्यय पढ़ने जा रहे हैं। एक है जो अलग से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो किसी तरह से जुड़ा हुआ नहीं होगा। दूसरा है जो माकिफ के साथ जुड़ा होगा, और तीसरा है जो अविभाज्य तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। So independent prepositions are given at the end of the lesson, or that chapter 6, chapter 7. At the end of that chapter, all the independent prepositions are given. They are used independently in a sentence. और 7वें अध्याय के आखिर में आप एक तख्ता देखेंगे जिसमें बहुत सारे शब्द ऐसे दिए गए हैं जो शब्दयोगी अव्यय है, जिनको अलग से इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी संज्ञा के साथ में जोड़ना जरूरी नहीं होगा। Now there are some prepositions, for example, mean, L, that is to, mean means from. They are used with markup. Markup means it joins two words together. अब कुछ ऐसे अव्यय भी हैं जिनको जोड़ने के लिए माकिफ यानी कि एक छोटी सी डंडी दो शब्दों के बीच में लगाई जाएगी, जिसका मतलब है कि दोनों को जोड़ करके पढ़ा जाएगा, जोड़ कर एक साथ बोला जाएगा, जैसे कि मिन या फिर एल। And there are inseparable preposition. There are three inseparable preposition in Hebrew that we are going to study in detail, because there are some rules when they are inseparably attached to the word, like article and pronoun. We saw this inseparable prepositions also when they are attached to the word. There is some vowel pointing changes takes place.
सबसे आखिरी वाला जो है inseparable prepositions, यानी कि अविभाज्य शब्द योगी अव्यय, जब इनका इस्तेमाल करना हो तो ये 3 ही हैं और इनका जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कुछ नियम का पालन करते हैं। इनके वावल्स को, स्वर को बदलना पड़ता है जब ये अलग शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हमने आर्टिकल या सर्वनाम के साथ में प्रयोग देखा था। Okay, can anyone remember what is the first general rule of the article? He with Pathak and Dagesh. He with Pathak and doubling Dagesh. Doubling Dagesh. Doubling Dagesh in the first root letter. But Yes. if that word first root letter is weak guttural, then it is pointed with He with Pathak. comment. A with comments. And if it is a Comments. strong guttural, He with He with Pathak, with no Pathak. A Dagesh. with Pathak. And then we learn some rules when guttural with comments are there, when the unaccented and accented things are there. So as there are different rules for the articles and the same rule are applied for the pronoun, or we have seen that relative khatib pathak, that is interrogative hey also, we see there the rules are the The article. it is the same rule or similar rules we see for interrogative hey and relative pronoun also. जिस तरह से आर्टिकल के साथ में कुछ नियम जुड़े हुए हैं, जैसे हम कहीं हे के साथ में पैथैक लगाते हैं तो कहीं हे के साथ में से गोल भी जुड़ जाता है, लेकिन वो जो नियम है उसी तरह से सर्वनाम के लिए भी नियम लागू होते हैं। ठीक उसी तरह से अविभाज्य तरीके से इस्तेमाल होने वाले शब्द योगी अव्यय के साथ भी कुछ नियम लागू होते हैं। Okay. So we are going to deal with inseparable preposition in detail. अभी हम उन नियमों के बारे में थोड़ी जानकारी लेने जा रहे हैं, कैसे इस्तेमाल हो। Now here I am giving you some example of independent prepositions. Now lifane hamelek, here lifane hamelek, that is before the king. अब जिनको अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे कुछ शब्द योगी अव्ययों के बारे में हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं। जैसे लिफने हैमेलख, यानी के राजा के सामने। It is not given in the workbook, but I am just showing you for your proper understanding. Now takhat haet means under the tree. तखात हाएत मतलब पेड़ के नीचे। Akhar ha mabul is after the flood. अखैर हमाबूल यानी के फ्लड यानी बाढ़ के बाद। Ben hamaim, between the waters. बैन हमाइम पानी के बीच में। Then here are some example. Vayabdel Elohim ben haor uven hakoshek. So there, when Elohim, God, is separating light from darkness, so that time he uses that prepositions, independent preposition ben. So Vayabdel means separated. Then separated Elohim ben haor, that is the light, uven hakoshek, that is from the darkness, between the darkness. बाइबल में जब ये आयत हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में, सबसे पहले पैदाइश में, तो वहां पर खुदा ने जब लाइट को यानी कि पानी को और रोशनी को अलग किया, रोशनी को और अंधेरे को अलग किया, तब वहां पर अलग, दोनों के बीच में अलग करने के लिए यहाँ पर बैन इस्तेमाल किया गया है। See here where my cursor is, ben, that is between. Uven hakoshek. So he separated light which was in between
or he separated light from the darkness. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बैंक शब्द का इस्तेमाल किया गया है दोनों को अलग करने के लिए, यानी कि अंधेरे और रोशनी के बीच से उसने बांट दिया, बीच में से बांट देना, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है. So that is Genesis 1:4. Then these are the Makef prepositions. Al ha'even, that is on the stone. Al ha'even का मतलब होता है पत्थर के ऊपर. El ha'adam, unto the man. El ha'adam मतलब आदमी को. Then ad ha-nakhal, that is Nakhal is valley, as far as the valley. Ad का यहाँ पर मतलब होता है जहां तक. अब वैली यानी कि यहाँ खाई, जहां तक खाई है वहां तक, ऐसा इसका मतलब हुआ. Min ha-arets, that is from the earth. Min का मतलब से, ha-aret यानी धरती से, जमीन से. So these all prepositions, if you observe, it is attached with makef. अब पहले जो हमने देखे उसमें अलग से इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यहाँ अगर आप गौर फरमाए कि दोनों के बीच में माकेफ यानी एक छोटी सी डंडी ऊपर की तरफ लगाई गई है. So this independent prepositions and makef preposition you will observe in biblical Hebrew. अभी ये दोनों तरह के संबंध सूचक अव्यय हम अक्सर देखेंगे बाइबल में. We'll see some example here. Va'etse Yona min ha'ir vayeshev mikedem la'ir. So here you will see min ha'ir, from the city. The preposition is used with makef. यहाँ पर हम अगर देख रहे हैं उदाहरण में मिन हाइर, यहाँ योना मिन अहिर यानी कि वो उस शहर से यहाँ निकलने या आने जाने की बात हो रही है. ध्यान देने वाली बात है मिन के साथ में माकेफ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हाइर मिन के साथ माकेफ के जरिए जुड़ा हुआ है. So here Etse means come out, and Yona came out from the city where Yeshev is, and he settled Mikwedem, that is at the east of the city. Now, these three prepositions we are going to learn. Beth with Shiva, Lamed with Shiva, and Kaf with Shiva. Beth with Shiva is in, by, with. Le means to, for, and K is like, as, according to. Sorry. आज हम तीन तरह के शब्द योगी अव्यय देखने जा रहे हैं. बेट शिवा के साथ होता है बे, यानी के में या से या साथ. लामेद के साथ शिवा जुड़ने से ले बनेगा, यानी के को या के लिए होगा. काफ के साथ शिवा जुड़ने से के बन जाएगा, यानी के जैसे या उसके मुताबिक. So here, these all inseparable prepositions are pointed with rules.
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अविभाज्य तरीके से लिखे जाने वाले शब्द योगी अव्यय शिवा के साथ लिखे जाएंगे. Now here at the beginning you will find the preposition bet with Shiva. Bereshit bara Elohim at Bereshit bara Elohim, that is in the beginning. So that be is in the beginning Elohim created. अब यहाँ पर हम नियम देखने जा रहे हैं. यहाँ पहले उदाहरण में बेत के साथ में शिवा लगा हुआ है. बेरेशित यानी कि बे का मतलब हुआ में, यानी शुरू में. बेरेशित मतलब शुरू में. Then here Mizmor LaDavid, that is Psalm of David, or Psalm which is unto David. मिज़मोर ले दावीद, ले का मतलब यहाँ पर हुआ दावीद के जो साम्स हैं, उसमें जो भजन संहिता लिखा हुआ है वो दावीद के हैं. Psalm for David. दाऊद के लिए लिखा गया. Now, when an inseparable preposition appears before a begat kefat letter, the letter will drop its dagesh lene. It is very important. जब भी अविभाज्य शब्दयोगी अव्यय किसी भी बेगात के पास अक्षर के साथ में आएगा तो वो अक्षर का दागेश लेने हट जाएगा. So here bait with dagesh lene becomes bevait. अब यहाँ पर दागेश लेने हट जाने से बाइट बन जाता है बेवाइट. Bevait. David becomes le David. दावीद बन जाता है ले दावीद. Now, first rule is two Shivas cannot begin at the beginning of the word. Two Shivas cannot begin a syllable. सबसे पहला नियम हम जानते हैं कि कोई भी शब्द की शुरुआत दो शिवा के साथ नहीं हो सकती. Generally, we learn first rule is Bet, Lamed or Kaf preposition is pointed with Shiva. सबसे पहले तो एक नियम हमने देखा कि बैत हो, लामेद हो, चाहे काफ हो, उसके साथ में शिवा जाता है. I will show you that. So here you will see the rule number 1. Normally the inseparable preposition is pointed with Shiva. It is given in your workbook. So this is the rule number 1. Examples are le voker. So this dagesh lene here is dropped out. पहला नियम हम ऐसा देखेंगे कि सभी अविभाज्य तौर पे लगने वाले शब्दयोगी अवयवों के साथ में शिवा जाता है. जैसे लामेद, काफ और बैत के साथ में शिवा जाएगा. लेकिन जब ये किसी भी बेगात के साथ अक्षर के सामने आता है तब उसका दागेश लेने हट जाता है. मिसाल के तौर पर बोकेर का दागेश हट जाने से वो बन जाता है ले बोकेर. Le voker.
and le Adam, then be Nahar, be Afar, ke Ish, and ke Lot. Now, le Voker is to the morning or to a morning, le Adam to a man, be Nahar in a river, be Afar in a dust, ke Ish like a man, and ke Lot like a Lot. So these are the pointings of these three prepositions, that is Bet, Lamed and Kaf. ये सबसे पहला नियम है कि बेत, लामेद और काफ के साथ में शिवा जाता है. Now, second rule, if now general rule is this three preposition is attached with Shiva, but if the first root letter of the word begins with Shiva, then what will happen? Now see, word beginning with simple Shiva take inseparable preposition with Hirik. Whenever the first word begins with a Shiva, two Shivas cannot open a syllable. That's why the preposition will take a Hirik. It is heightened to Hirik. अब साधारण तौर पर तो लामेद, बेत या काफ के साथ में शिवा जाता है, लेकिन जब अक्षर बदल जाते हैं तो नियम भी बदल जाता है. जब दो शिवा इकट्ठे हो तो शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती, इसीलिए बेत हो, लामेद हो या काफ हो, उसके साथ में शिवा हटकर हिरेक बन जाता है. Now see here, instead of le me ragel, it become lim ragel, bim ragel, kim ragel. So instead of le me ragel, it will become lim, because two Shivas at the beginning cannot open a syllable. I request everyone to say without unmuting. You can say after me. Two Shivas. Two Shivas. Don't unmute yourself. You keep muted. Two Shivas. I will just see whether your mouth is moving or not. Two Shivas at the beginning cannot begin a syllable. Cannot begin a syllable. दो शिवा शुरुआत में syllable की शुरुआत नहीं कर सकते. Today, please bear with Sister Sanjot. She is not feeling well last 2-3 days back, although she is doing a very we can say very good job. Glory to Yeshua. Only Yehoshua, that is Yeshua, is the exception for this rule. अब इस नियम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अपवाद है, यहोशुआ. Now, here, if we see Yehoshua over here at right hand side, there is a over under Yod, there is a Shiva. Now, what happens when two Shivas cannot begin a syllable? This Lamed will take Hirek, but Shiva under Yod will be disappeared and it will become a long Hirek Yod vowel. अब यहाँ पर जो हम उदाहरण देख रहे हैं, यहोशुआ, यहाँ योद के साथ में शिवा लगा हुआ है. अगर हम उसके साथ में ले जोड़ते हैं तो दो शिवा चूंकि किसी भी सिलेबल की शुरुआत नहीं कर सकते, इसीलिए लामेद के नीचे से शिवा हट करके वो हिरेक बन जाएगा. अलबत्ता योद के नीचे से भी शिवा सम्मिलित हो जाएगा लामेद में और वो सीधे बन जाएगा लिहोशुआ. So instead of Yehoshua,
it becomes now Liho-Shiva. This is the exception. Under Yod, Shiva will not be counted. So to better understand this rule, I will again take you here. See here. To Shiva will result in a Hirek. Now, preposition started with the first word started with Shiva. So it will becomes first Shiva, that is under preposition will becomes Hirek. For example, here Behema is animal. So I want to say Behema or Behema. So what will become here? It will become Hirek. Be Vehema. That is in animals. अब यहाँ पर जो हम उदाहरण देख रहे हैं, बेहमा का मतलब हुआ जानवर, बहुवचन जानवर। अब इसको हमने अगर बे के साथ में जोड़ना है तो दोनों साथ आना मुश्किल है शिवा की वजह से, इसलिए पहले बेत के नीचे हिरेक आ जाएगा और दूसरे बेत वाला दागेश हट जाएगा और वो बनेगा बी वहमा। Here also there are two examples given: Shalomo, Pe Shalomo, Be Shalomo, and here Shalomo will becomes here Li Shalomo. That is to Solomon and for Solomon. यहाँ पर भी हम देख रहे हैं श्लोमो यानी कि शलमोन राजा, तो श्लोमो के साथ में अगर बेत जुड़ जाता है तो वो बी बन जाएगा बी श्लोमो, और लामेद जुड़ना है तो बन जाएगा ली श्लोमो। Here it should be bet over here. Bishlomo. We'll take example from here. Limragel, Bimragel, and Kimragel. So two Shivas, the first Shiva under preposition will become Hirek. That rule you have to remember. Then rule number 3, word begins with composite Shiva, take corresponding, take inseparable preposition with corresponding short vowel. For example, here the word is Ashot. Under Ain, there is a Khatip Pathak. So it will take corresponding short vowel, that is Pathak. Similarly, here Edom, there is a Khatip Segol. Here it will take the corresponding short vowel as Segol, Be'edom. And Onia, corresponding short vowel is Comets. So it will take Kaonia. तीसरा नियम हम देखने जा रहे हैं कंपाउंड शिवा, यानी कि संगठित तरीके से जब हम शिवा इस्तेमाल करते हैं तब जो अविभाज्य तौर से इस्तेमाल होने वाला शब्द योगी अव्यय होगा वो उस संगठित यानी कि कॉम्पोजिट शिवा का जो छोटा वाला स्वर होगा उसको उठा लेता है। जैसे कि अब अशोथ में जो है आइन के नीचे पैथैक है और शिवा है तो पैथैक ले लेता है और वो ला अशोथ हो जाएगा। एदोम के साथ में जो सिगोल है उसको ले लेगा, बनेगा बे एदोम, और निया के साथ में जो कमेट्स लगा हुआ है उसको लेकर के बनेगा का और निया। Okay, all this example next time I will show you on, if possible I will show you on whiteboard. So here if you see for Ashot there is a Khatip Pathak La Ashot, Edom Khatip Segol Bead Edom,
and onia, that is ship. Ka onia, like a ship. Be Edom, in Edom, in the Edom, and la ashot, that is to a work. यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे सबसे छोटा स्वर की आवाज जो है वो ले लेता है, जैसे ला अशोत मतलब काम के लिए, बे एदोम मतलब एदोम नाम की जो जगह है उसमें, का ओनिया, ओनिया मतलब जहाज, समंदर में चलने वाला जहाज, और का ओनिया मतलब उस जहाज के जैसे, उसके जैसा. Now, only exception to this rule number 3 is Elohim. इसमें भी एक अपवाद है और वो है एलोहीम. Now, with Elohim, if we attach inseparable preposition lamed, it will become Lelohim. अब यहाँ पर जैसे पिछले नियम में बताया गया था उसी तरह के यहाँ पर भी नियम में जो है वो सम्मिलित हो जाएगा. अलेफ के नीचे से सारे स्वर जो भी लगे होंगे वो हट जाएंगे और वो लामेद के नीचे सिर्फ और सिर्फ सिरे लग जाएगा और बन जाएगा लेलोहीम. Now, if you see, one more thing you have to observe over here, which is, can anyone tell me which is the short corresponding short vowel of under Aleph of Elohim? Segol. Now, why here it is not a segol but sere? Why here it is sere, not segol? There is also short vowel. See what happens. Khatib segol under Aleph that vowel will be completely removed or vanished, and for the purpose of heightening, the segol will be heightened to long vowel sere, and the vowel under Aleph it will be completely removed and it will become sere Aleph, that is a long vowel. अभी जैसे मैंने कहा था, हिंट दिया था कि अलेफ के नीचे जितने भी स्वर दिखाई देते हैं वो लामेद के साथ में सम्मिलित हो जाने से लामेद के नीचे जो सेगोल लगना है वो बढ़ करके सिरे बन जाएगा और इसीलिए वो बनेगा लेलोहीम. Instead of lamed with segol, it will be heightened to sere, and the vowel under Aleph will be vanished. This is rule number 3. Now, rule number 4 is the inseparable prepositions usurps the preposition, position and pointing of the article minus he. Now, this is a very important rule you need to remember. Now, for example, Hammelek. Yeah, you can translate. अब ये जो है चौथा नियम बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला है क्योंकि यहाँ पे 2 नियम मिल जाने वाले हैं. सबसे पहले तो यहाँ आर्टिकल जो हम लोग हे लगाते थे उसके नीचे जो भी पॉइंटिंग आता है, जो भी स्वर पॉइंटिंग देता है उसको ध्यान में रखना है. और लामेद हो, बेत हो या काफ हो, जब उसके साथ में जुड़ जाता है तो उसका पॉइंटिंग कैसे बदल जाता है वो अब हम देखते हैं. See, for example, if the word is with article, that is Hammelek. Hammelek means the king. So this rule, what does this rule gives us the clue, or what is this rule? You have to remove the article hey, and instead of that you have to place that preposition. Okay, so Hammelek will become Lammelek. The king now will become Lammelek, means to the king. You have to remember that the article is there, although we are removing the article, and instead of that placing the preposition, you
you have to remember that article is there. How you will know that article is there? In the first root letter, there is a doubling dagesh. That gives us the clue that there is an article over there. So while translating, you will not say to a king. No, to the king. There is an article over there. अब यहाँ पर हम जो उदाहरण देख रहे हैं, हैम मेलेख, यहाँ पर एक निश्चित आर्टिकल जो है, हम इंग्लिश में जिसको द कहते हैं, वो जुड़ा हुआ है, यानी कि वो राजा, एक राजा, उस खास राजा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जब हमको बताना है उस राज्य को, तो यहाँ लामेद लगेगा, लेकिन हे हट जाएगा, पॉइंटिंग वही रहेगा, हे के नीचे जो पथक लगा है वो वैसा ही रहेगा, हे की जगह में लामेद आ जाएगा। अब लामेद के नीचे शेवा नहीं लग रहा है, वो हे की पॉइंटिंग ले लेता है और अब वो बनेगा लैम मेलेख, लेकिन मेन के साथ में जब दागेश उसके अंदर बैठा है तो यहाँ हमको मालूम हो जाता है कि इसके साथ में आर्टिकल जुड़ा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो वहीं मौजूद है, क्योंकि ला मेलेक लामेद के नीचे पॉइंटिंग बदल गई है। ये आमतौर पर होने वाली पॉइंटिंग नहीं है, इसी से हमको पता चलता है कि यहाँ पर आर्टिकल जुड़ा हुआ है। Now, if these examples you find in Bible or biblical Hebrew, then you need to remember that you have to revise the rules of the article once again. Because if you have forget the rules of the article, you will not remember that there is an article over there. For example, Hamelech, Ha Adam will become Ka Adam. Then Afar, He Afar. You know that Ain with comets, we have to use He with Segol. So when you are replacing that He with Bet, Be Afar, in the dust, that time you need to remember that there is an article over there. So for that you have to revise the rules of the article. अभी हम जो है अविभाज्य तौर से लगने वाले शब्द योगी अव्यय को पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको आर्टिकल के भी नियम अच्छी तरह से याद करना होगा, वरना ध्यान में नहीं आएगा कि इसके साथ में आर्टिकल जुड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे हमने यहाँ उदाहरण देखे हैं, हा आदाम यानी कि वो मनुष्य, जिस एक पर्टिकुलर खास तौर पर जिस किसी भी मनुष्य की बात हो रही हो, तो यहाँ लिखा है हा आदाम, और का जब जुड़ गया, का आदाम जब बन गया, यानी कि आदमी के साथ, उस आदमी के साथ, किसी खास आदमी के साथ में, या फिर अफार, अफार यानी मिट्टी के साथ में जब हे जुड़ जाता है कि वो मिट्टी, अब बे अफार यानी कि उस मिट्टी में, इसका मतलब बदल जाना है, मिट्टी में और उस मिट्टी में, दोनों का मतलब बदल जाता है। ये ध्यान रखने के लिए आपको आर्टिकल हे के नियम फिर एक बार याद करना होगा। And then this last rule, inseparable prepositions immediately before the accented syllable of the word in pause sometimes takes comments. So these inseparable prepositions, you need to remember that before the accent, if there is accent before it comes, before the inseparable prepositions, the word is with accents, then it will take the pointing comments. For example, maim and shevet. For maim, there is a siluk, and for shevet there is a athnak. So before that accent, if preposition comes, then it will point it with comments. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब भी एक्सेंट पड़ता है, इब्री भाषा में अक्सर एक्सेंट बदल जाता है या फिर खास तौर से एक्सेंट दिखाया जाता है शब्द के किस हिस्से पर एक्सेंट पड़ रहा है। शब्द के शुरू में अगर एक्सेंट पड़ रहा है और तुरंत उससे पहले हमको कोई भी शब्द योग्य अव्यय का प्रयोग करना है, तो कई बार उसके नीचे
स्वर को बढ़ा करके कमेट लगा दिया जाता है, जैसे यहाँ नईम पानी, लेकिन नईम के साथ में यहाँ पर सिलूक लगा दिख रहा है, यानी उसके नीचे एक्सेंट आता है, इसीलिए लामेट के नीचे कामेट आ जाता है, वो बन जाता है लामाइम। या फिर शेवेत के नीचे हम देख रहे हैं एथनैक लगा हुआ है शिन के साथ में, तो एथनैक की वजह से पता चलता है एक्सेंट उसके ऊपर है, इसीलिए लामेट के नीचे कामेट लग गया है और वो बन गया है ला शेवेत। Now, these 5 rules you need to remember, you need to revise, and there is assignments given. After revising the rules, you need to solve the assignment for the practice. आपको ये 5 नियम को अच्छी तरह से याद करना है, और जैसे हम जान रहे हैं वर्कबुक में इसके जुड़ी हुई असाइनमेंट दी है, आपने उससे भी सॉल्व करना है। So don't worry, next time we'll take once again revision, and then we will go for the unique preposition, that is mean. अगली बार हम दोबारा इन सब की एक बार रिवीजन करेंगे, और फिर अगला जो शब्द योगी अव्यय है मीन, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। But you need to take efforts from your side during a week. You need to revise these rules of the prepositions, and simultaneously you will, when we will come to the rule number 4, you need to again revise the rules of the article. अब ये आपके हाथ में है, आपको मेहनत करनी होगी, हफ्ता भर पढ़ाई करनी होगी और सारे नियमों को याद करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप नियम याद करते जाएंगे, चौथे नियम पर आते आते आपको पीछे जाकर के फिर से एक बार आर्टिकल्स के नियमों को भी याद करना पड़ेगा। Okay, so next time we'll take that unique preposition mean, and I think next session we'll finish article and we'll move towards a next lesson, and next lesson is chapter 8, that is conjunction and relative pronoun. अगले लेसन में हम इसको जरूर पूरा करेंगे। मीन जो शब्दयोगी अव्यय है उसके बारे में जानकारी लेके अगले हफ्ते में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें संबंध सूचक भी जानकारी देने वाले और अलग तरीके से बताए जाने वाले सर्वनामों के बारे में हम जानकारी लेंगे। Can anyone confirm? I have given 2 PDF file, that is one on workbook and one is on assignment. Is it correct? Yes, Master. Yes, sir. Okay. So the another PDF file which is on assignment, there is this assignment number 6, that is article, and assignment number 7 is prepositions. Okay. I think Sister Kaylin, it is clear to you. Okay, so last week I was reading Exodus. I read it before, but I was reading it again, and I saw a very wonderful scripture portion in that Exodus, and that I will put it before you in 10 minutes. पिछले हफ्ते मैं निर्गमन को पढ़ रहा था, हालांकि पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन दोबारा पढ़ रहा था और कुछ खास वचन मेरे सामने आए जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। You all know that when Moses took the children of Israelite that night, Passover night, when God with outstretched arm removed these people of Israel from the bondages, and when
he was guiding them towards the Red Sea. आप सब लोग जानते हैं कि जब मोशे सारे इजरायली लोगों को इजिप्ट से बाहर निकालने की तैयारी में था, तो खुदावन ने अपना हाथ आगे बढ़ा करके तमाम इजरायलियों को इजिप्ट से, मिस्र देश से बाहर निकाल के वो लाल समंदर की तरफ लेके जा रहा था. And in all these things, you know that God only hardened the heart of Pharaoh. और इस सब में हम जानते हैं कि खुदा ने खुद ही फिरौन का दिल पत्थर बना दिया था. Because he wanted to show his glory. क्योंकि खुदा अपना जलाल उसको दिखाना चाह रहा था. And verse 13, and Moses said unto the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will show you today. For the Egyptians whom you have seen today, you shall see them again no more forever. और मोशे ने जब इजरायली लोगों को कहा कि धीरज रखो, हौसला रखो, क्योंकि आज जिन फिर मिस्रियों को तुम देख रहे हो वो आखिरी बार होगा, तुम्हें उनको दोबारा देखना नहीं होगा. Okay, here I'm putting it before Exodus chapter 13 in Hebrew. And if you just click on the prepositions, so these are the prepositions. L. All these are the prepositions. Most of the prepositions you will find L. Le, li, ben, L with makef, lak, lamed preposition, allow, add, ben. So all these are the prepositions which connects the word together. In every chapter, you will find these prepositions. So this preposition chapter is very important. निर्गमन का 13वां बाब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. इंतजार करते हैं कि इसको पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको शब्द योगी अवयवों का प्रयोग दिखाई देगा. So if we read Exodus chapter 13 and verse 13, here it is given, Vekol Feter Chamor Tipte Beshem Ve Imlo Tipte Ve Arafeto Vekol. No, this is not the scripture portion. I think one verse is here. Okay. So that scripture portion you will find in verse 14. Chapter 14 you will find. Chapter 14 and verse 13. So in fact, every chapter you will find the prepositions. So here, 13. See here, Vayomer. Vayomer means then spoke Moshe El Ha'am. Then spoke Moshe to the people, Al Tira, fear ye not. Al means not. That is also a preposition. Al Tira, fear not. Hit Yatseu. Hit Yatseu. The root word is Yatsau. And here he is asking the people to stand still. To stand still. Don't do anything. You know, the situation was that behind them, Pharaoh was coming with his army. Yes, sister. यहाँ पर हम 14वें बाब की 13वीं आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत,
खड़े खड़े यहोवा के उद्धार को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो उन्हें फिर कभी न देखोगे। यहाँ पर जब मोशे लोगों से कह रहा है कि डरो मत, डरना क्यों था? क्योंकि पीछे से मिस्री आ रहे थे, सामने समंदर पड़ा था। Now they were in terrible situation. If they will look behind, there was death, and before them was a Red Sea, and there is no hope. सामने लाल समंदर था जिसमें कोई उम्मीद नहीं थी उन लोगों को, और पीछे से मिस्री की पूरी फौज आ रही थी। यानी कि एक तरह से जैसे हम कहते हैं कि सामने कुआं है और पीछे खाई है। So in this situation, Moses is saying to the people, Al Tira. Al Tira means fear not. Hits Yatseu means stand still. U Reu. Reu means and see. Et. Now very beautifully he's preaching the gospel here. He is preaching Yeshua. Ureu et Eshuat Yahweh. And he's saying, see, stand still and see. Eshuat Yahweh means the hand of Yahweh, that is salvation. In Hebrew, the word salvation means Yeshua. यहाँ पर मोशे बहुत बढ़िया तरीके से ऐसी हालात में भी यीशुआ का वचन, यीशुआ का कलाम उन लोगों को बता रहा है, जब वो कह रहा है कि देखो तुम याहवे के जलाल को, उसके हाथ को देखोगे। And whenever the word Yeshua or Yeshua comes, I feel very happy. My joy is like a flooding joy. I experience a flooding joy. यीशुआ का मतलब इब्री भाषा में होता है उद्धार, और जब कभी भी यीशुआ शब्द का जिक्र होता है, मेरे अंदर खुशी का एक बवाल उठ जाता है, बवंडर, एक बाढ़ आती है खुशी की। You will experience him better in your adverse situation. जब आप मुश्किल में पड़े हो तब आप उसको खास तौर पर अनुभव कर सकते हो। If you're lacking nothing, if everything is fine, you will not experience him, and you will not find that he is a very important person in your life. अगर आपके पास सब कुछ है, जो जो आपको चाहिए वो सब अगर आपके पास है, तो यकीनन आप उसकी मौजूदगी का अनुभव नहीं करेंगे और उसकी कीमत भी नहीं समझोगे। But here, see, God's great servant Moses, he's saying here, Ureu, that is, for salvation we have not done anything. We are saved by grace through faith. और यहाँ मोशे कह रहा है उनसे कि देखो हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे हम वो बचाए, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उसकी कृपा की, उसकी अनुग्रह की वजह से बचाए जा रहे हैं। God's servant Paul says, we are saved by grace through faith. और खुदा का खादिम पौलुस ये कहता है कि हम खुदा के ऊपर रखे हुए विश्वास के जरिए उसका अनुग्रह हमको मिलता है और हम बच जाते हैं। Now you yourself put yourself in that situation and see what you would have done. Behind you there is a death. Death is coming behind you, and before you there is no hope. Means surely you are going to die. अगर उस समय आप उन लोगों की जगह होते, आप उस हालात में होते जहां सामने लाल समंदर पड़ा है, जिसमें ना तो कोई आने जाने का जरिया है और पीछे सेना पड़ी है फिरौन की, तो आप क्या सोचते? कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी उस समय उनके पास। And here the prophets say, only see, Reu means only you have to see, don't do anything. Only see et Eshuat Yahweh. Only you have to see salvation of Yahweh. और यहाँ पर जो खुदा का खादिम है मोशे, उनसे कह रहा है कि तुम्हें करना कुछ नहीं है,
बस खड़े हो और देखो वो किस तरह से तुमको अपना उद्धार दे रहा है. And again he is applying here relative pronoun. Asher ya ase lakem. Asher ya ase lakem. Hayom ki asher raitem. Et Misraim hayom lo tosifu le reotam od ad olam. That is, he's saying you have to just see the salvation which God is doing for you. You have to just look to that salvation. He's saying, see the salvation of Yahweh, which he will show you today for the Egyptians whom you shall see, whom you have seen today, you shall see them again no more forever. अब यहाँ मोशे कह रहा है कि तुमने करना कुछ नहीं है, बस खड़े खड़े देखो आज जो वो उद्धार तुमको देने जा रहा है. जो यहाँ पर जो शब्द जो है वो भी एक शब्द योगी अव्यय है. तो ये कह रहा है कि जो तुमको वो देने जा रहा है, तुम्हारे लिए जो किए जा रहा है, जिन जिन मिस्रियों को आज देख रहे हो उनको दोबारा कभी न देखोगे. Prophetically, this verse applies to us also. You can also find, that for every believer, everyone who believes in Yeshua, Satan is their enemy, because a common enemy of God and we ourselves, us, is Satan only. हम ये बखूबी जानते हैं कि हमारे और खुदा के बीच में जो दुश्मन है शैतान, वो एक ही हमारा दुश्मन है, हम दोनों का ही दुश्मन है. And we must know that Pharaoh represents Satan and his army represents all the demonic forces that is attacking against us. आज के हालात में अगर हम कहें कि हम बीच में उन इजरायलियों की तरह है, बिल्कुल एक तरफ परेशानी होती है और फिरौन जो है वो शैतान का रूप है और उसकी सेना जो है वो शैतान के फौज की बराबर है, जो बार बार हम पर किसी न किसी रूप में अटैक हमला करती रहती है. They are continuously accusing us and they are continuously attacking us through a person or through a thing or through in our mind. He's putting us into depression. Every now and then, in every way, Satan is attacking God's people. और शैतान जो है समय समय पर हर तरीके से हम पर हमला बोलता रहता है. कभी हमारे अपनों के जरिए हम पर वार करवाता है, कभी हमारे जहन में गलत गलत बातें डाल देता है जिससे हम अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर असली रास्ते से भटक जाते हैं. खुदा से दूर होने के लिए वो कोशिश करता रहता है. And in certain people's life, Satan has played in the relationship, and relationship is such a stake that it is going to be broken. और कई जगहों पर शैतान ने रिश्तों पर इस तरह के हमले किए हुए हैं कि वो रिश्ते टूटने के कगार पर हैं. So your enemy, you knows better who is your enemy. और आप सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं आपका असली दुश्मन कौन है. God's word says that by the stripes of Yeshua, you are healed. और ये कलाम हमको बताया है कि यीशुआ को लगे हुए कोड़ों के जरिए हमको आजादी और चंगाई मिली है. But if you are accepting disease, it is from the enemy, not from God. और अगर आप किसी भी बीमारी को कबूल कर लेते हैं तो वो खुदा से नहीं बल्कि शैतान की तरफ से है. Lack is one type of curse. Financial lack is one type of curse. किसी भी बात का अभाव एक तरह का श्राप होता है, चाहे पैसे का अभाव हो, चाहे अच्छी सेहत का अभाव हो, वो एक तरह का श्राप है.
2 Corinthians 8:9 says, "For we know the grace of Lord Yeshua, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that through his poverty we might become rich." और कुरिन्थियों में जब हम देख रहे हैं, दूसरी कुरिन्थियों में जब हम देखते हैं, वचन हमसे कहता है कि यीशुआ जो शहंशाहों का शहंशाह था, इतना अमीर होते हुए हमारी खातिर वो गरीब बना, ताकि उसकी गरीबी के जरिए हम अमीर बन जाए. So you know better your enemy. तो आप अपने दुश्मन को बखूबी जानते हैं. And God's desire or God's will, according to his word for you, is your well-being, not to harm you. और कलाम के मुताबिक हम जानते हैं कि खुदा की इच्छा हमारे लिए हमारी तरक्की या हमारी अच्छाई है, भलाई है, कोई गलत बात नहीं है. So here Israel is facing an enemy. Behind them is a death, that is Pharaoh and his enemy is coming, and before them there is no hope to get rid of. और हम जब यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर के, इस्राएली लोग बीच में फंसे हैं, आगे समंदर है, पीछे फिरौन की फौज है, कहीं से उनको उम्मीद नजर नहीं आ रही थी. But here, very important role God's servant, that is God's prophet, is doing here. He is proclaiming Yeshua. और यहाँ पर खुदा का खादिम मोशे जो है, ऐसे हालात में भी खुदा का कलाम दावा ठोक रहा है और यीशुआ को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है. So if you are facing any situation, rejoice, because here Yeshua Yahweh, he is doing a work for you today. That is Yeshua Yahweh. Yahweh Elohim has wrought a salvation for you. और अगर आप किसी तरह की मुसीबत में फंसे हैं, कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो हौसला रखिए, क्योंकि यहाँ पर यीशुआ यहवे जो है आपकी मदद कर रहा है, आपके लिए वो मौजूद है. The work of the hand, work of Elohim's hand, Yahweh Elohim's hand is Yeshua. और यहवे एलोहीम का हाथ का काम है यीशुआ. His word is Yeshua. और वो शब्द है यीशुआ. In the beginning was the word was with God, and the word was God. हम जानते हैं यूहन्ना की अंजील में जब लिखा हुआ है, लिखा है कि वो सबसे पहले शब्द जो है वो मौजूद था, वो खुदा के साथ था, और उसी के जरिए खुदा ने पूरी दुनिया, पूरी कायनात को बनाया. So right now, as you are hearing this word, and as you are putting you in that situation, remember that today, here it is giving the word Hayom, means today. Today, God is working this salvation for you. The enemy, which the Egyptian, which represents the enemy, which you are seeing, you will see him no more forever. हौसला रखिए, क्योंकि यहाँ पर कलाम हमको ये बता रहा है योम का मतलब होता है आज का दिन, और आज के दिन यीशुआ तुम्हारे लिए काम कर रहा है, इसीलिए हौसला रखो, परेशान मत हो. उसी तरह से जैसे इस्राएलियों के सामने परेशानी थी और वो हल हो गई, आपके लिए भी होगी. The enemy which you are facing, you will see him no more. आप जिस दुश्मन का सामना इस समय कर रहे हो, उसको दोबारा कभी नहीं देखोगे. God is going to put him, he will be greatly defeated in the deep depth of the sea. और खुदा उसको बहुत बुरी तरह से हरा कर समंदर की गहराई में फेंक देगा. Because here the prophet of God says, Yahweh ilachem lachem ve'atem ta charishun. That is, Yahweh will fight for you. You should hold your peace. और यहाँ पर आखिरी हिस्से में वो कह रहा है कि यावे एलोहीम जो है तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है और तुमको अपनी शांति दे रहा है, इसलिए डरना नहीं.
So Yahweh Elohim is fighting your fight. यावे एलोहिम खुद आपकी लड़ाई लड़ रहा है और कह रहा है कि बस तुम शांत रहो. And you know what he did for Israelites? और आप सब जानते हैं कि उसने इस्राएलियों के लिए क्या किया है. In same chapter, verse 24, I will read. And it came to pass that in the morning watch, the Yahweh looked unto the host of the Egyptians through the pillar of the fire and of the cloud, and troubled the host of the Egyptians. And he took their chariots' wheel, that they drave them heavily, so that the Egyptians said, let us flee from the face of Israel, for Yahweh Elohim fighting for them against the Egyptians. और बहुत चमत्कारी ढंग से हम 24वीं आयत में देखते लिखा है कि रात्रि के अंतिम प्रहर यावे ने अग्नि और बादल के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि डाली और उन्हें घबरा दिया. उसने उनके रथों के पहियों को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया. अतः मिस्री कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भाग जाएं, क्योंकि यावे उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है. Yahweh is fighting against Egyptians. और यावे खुदा आज भी हमारे लिए हमारे दुश्मनों के खिलाफ अर्थात मिस्रियों के खिलाफ लड़ाई कर रहा है. So he will fight for you. करेगा. So don't fear, he will fight for you. डरना मत, डरना मना है. डरे नहीं, हर परेशानी का सामना करे, खुदा आपकी लड़ाई खुद लड़ रहा है. और And after the triumphant victory, after this triumphant victory, Moses and the children of Israelites, they sang a song. और इस फतह के बाद मोशे और तमाम इस्राएलियों ने एक गाना गाया. And here, once again, he says in verse 2, 15th chapter, verse 2, Azi ve Zimrat Yah. That means Yahweh is my strength and song. Azi means strength and Zimrat means song. Yahweh is my strength and my song. Vayahi li leshua. Again, here see the prepositions lamed. Lishua. Here, Yeshua became my salvation. He again is proclaiming that words again, which before the situation, before getting the victory, he proclaimed it by faith that be still and know the salvation of Yeshua. And here in verse 2, 15th chapter, verse 2, he's saying, Azi ve Zimrat Yahweh ve Yahi li Lishua. That is, the Lord is my strength and song, and he is become my salvation. और जो गाना मोशे ने और इस्राएली लोगों ने मिलकर गाया, उसमें मोशे ये कह रहा है कि याह मेरा बल और जीत है, और वो मेरा उद्धार भी ठहरा है, वो मेरा परमेश्वर है, और वो उसकी स्तुति करना चाह रहा है. लेकिन यहाँ साफ साफ जब मुसीबत आई तब उसने कहा शांत रहो और खड़े खड़े देखो किस तरह से वो तुमको उद्धार देता है, और देने के बाद उसकी स्तुति करके कह रहा है कि वो ही मेरा उद्धार ठहरा है. There is a lot of things to say, but we'll finish over here. But very exciting thing I'm going to tell you is here is Eshuat Yahweh. बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन यहीं पर अब हम रुकेंगे और एक ही बात मैं तुम सबसे कहना चाह रहा हूँ, यशुआ याहवे. Whenever I don't know about you, whether you are feeling or what you are feeling, I don't know whether you are getting it or not, but the work of Yahweh's hand is Yeshua, and
Yeshua means deliverance. Yeshua means salvation. Yeshua means deliverance from all your problems. मैं नहीं जानता इस वक्त आप लोग क्या अनुभव कर रहे हैं या मेरी बात को कितना समझ रहे हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि याहवे एलोहीम के हाथों का काम है यीशुआ, और यीशुआ के जरिए ही हमको मिलती है मुक्ति और उद्धार, अपने गुनाहों से मुक्ति मिलती है. And the true joy is in his presence, because in his presence there is a pleasure, there is a joy, flooding joy, and at his right hand is the pleasures forever. और उसकी मौजूदगी में ही खुशी है, बल्कि खुशियों की बाढ़ है, और उसी के सामने हमको मिलती है सारी खुशी. Let's close the session. May Yahweh Elohim bless you abundantly, and may he remove you from these situations and give you an experience of Yeshua Yahweh continuously. या याहवे आप पर बारिश करे खुशियों की और आशीषों की, और आपकी तमाम परेशानियों से बाहर निकाले, और आप अनुभव करें यीशुआ याहवे की. Okay. I request now Sister Purnima to close the session with prayer. Hallelujah. Hallelujah Adonai. Hallelujah Elohim. Hallelujah. Yahweh Elohim. ये आशा ये हम आपके कदोश 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 का धन्य इलोहिम यशुआ मसीह के कदोश दाम में छुपकर आपके सामने आते हैं, आपके चरणों में आते हैं, आपसे आपका धन्यवाद देते हैं. आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सभा के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए जो आपने अपने बच्चों को दिया, इन स्वर्गीय खजानों के लिए, इस मुख्य प्रकाश के लिए जो आपने अपने बच्चों पर चमकाया. हम इसके लिए सब कुछ के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, और आपने ये मांगते हैं कि और भी बहुत ऐसे अपनी शकाइना को अपने बच्चों पर, अपनी सभा पर चमकाएं. ये सब कुछ हम आपसे मांगते हैं याहवे अब्बा पिता, आपके प्यारे बरधान्य एलोहीम यशुआ मसीह की सुंदर जलाली और रब्बी नाम में हमारी इस प्रार्थना को स्वर्ग में सुने और ग्रहण करें. आमीन. Amen. Amen. Lehitraot. Shalom. Shalom Aleichem Lehitraot. That is shalom upon you and goodbye. Lehitraot. Lehitraot. I'm ending the